available in remote centers, connected through the teleconferencing. Today's lecture is networkings, and we have invited another young expert, engineer Saurav Kaushal. Saurav Kaushal has developed his skill in networking area. As regard his education, he is known to me when he was 5 years old. But seeing in our eyes, he is getting the heights and developing his skill in networking area. We hope in future he will develop his more capabilities. Please listen him very carefully and thoroughly, and he will explain the concept of networkings. Now I request Mr. Saurav to please come here and take the place. Mr. Saurav. Well, good afternoon, everyone, and I would like to thank you, Dr. S.B.L. Sachan, for such kind words. Yes, that's true that he knows me from the age of 5. So, our today's topic is on networking. So, I thought let's make this topic more interesting. We'll not be digging that much deeper into that OSI model, TCP/IP model, and the basics, because I guess you all are teachers, and you all must be knowing about the OSI and the TCP/IP model. So, what I have decided is we'll be starting with how a network behaves, how a network looks like, and we'll be concentrating more on the static routing. Okay? So I think we should proceed. Okay, let's start off with a switch. What do we mean by a switch? Participants at NITA Chandigarh and at the various remote centers. This is a question. What is a switch? Any idea? Switches are used to connect multiple devices on a network within a building or a campus. Well, I define switches as switches are used to make your network. Switches makes your networks, whereas your routers are used to connect multiple networks together. With help of switches, we can share all the resources within our campus. Like we have IP telephones with us, we have printers with us, we have our web server. That all can be clubbed together into a switch network. And as we know, switches works at the layer 2 layer 2 of the OSI model, which is your data link layer. Switches can connect computers, printers, servers for creating a shared resources. Switches allow to share various information, etc. Now, how does a switch network looks like? किसी को आइडिया यहाँ पर बैठे हुए को कि स्विच नेटवर्क हमारा लगता कैसे दिखने में? क्या होता है? एक स्विच होता है, कुछ पीसीज रहते हैं हमारे कुछ वेब सर्वर रहते हैं, कुछ मेल सर्वर होता है जिसके थ्रू हम अपनी मेल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे को, कुछ प्रिंटर्स रहते हैं, कुछ इस तरह का देखने में हमारा स्विच नेटवर्क लगता है. We have a switch, we have these shared PCs, एक प्रिंटर है हमारा शेयर्ड और एक हमारा सर्वर है. अगर हमारा बड़ा नेटवर्क है, बड़ी कंपनी है, we can have IP telephones as well. If you are having any doubts related to switches, you can please ask me because I'll be concentrating more on static routing. Okay? Shall we move ahead? Okay, now what is a router? And I would like to know from you at what layer our routers work. Network layer. कौन सी layer होती है? 3 layer. That's layer 3. As I have defined, switches are used to make a network, and routers are used to connect multiple networks together. Okay? Same as the definition says, routers are used to connect multiple networks together. For example, you would use a router to connect your network computers to internet. अगर हमें internet को access करना है, we should have one router.
in your colleges, in your universities, wherever you go, you will find switches, you will find computers, and definitely you will find one router. Without a router, your network is incomplete. You cannot have a internet access without your router. Router will act as a dispatcher, choosing the best route for your information to travel so that it is received quickly. Like there might be many ways for a router to reach to the internet, but it will choose the best path, best and the shortest path to reach the internet. We'll be covering it today, don't worry. And router functions at the layer 3. Okay, how does a router look like? कैसा होता है router देखने में? किसी ने देखा कभी router? किसने देखा यहाँ पे router? Please raise your hands. I would like to know. No one? कुछ इस तरह का आपका देखने में राउटर लगता है. How does it do? This is the power cable. जहाँ पे आप उसको पावर देंगे राउटर को. पीछे इसके कुछ पोर्ट्स रहते हैं. ऑक्सिलरी पोर्ट होता है, कंसोल पोर्ट होता है और कुछ वेरियस फास्ट इथरनेट या गीगाबिट इथरनेट के लिंक्स होते हैं, जिसके थ्रू आप अपने राउटर को आईपी एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं. एंड प्लीज मेक श्योर दैट एवरी interface on a router is a network. This is very important. Every interface on a router is a network. Campus network design. Campus network कैसा लगता है हमारा देखने में? I told you any network is incomplete without your switch and without a router. We have already seen the switch network. Now let's have a look if a router is deployed in our network which is taking us to the internet. How networks look like? कुछ इस तरह का. Earlier what we were having is, we were having only this much. We were having a switch, our PCs, our shared printer and a server. But now if you want to go, if any PC from here wants to go to and access the internet, he has to go via a router. कैसे जाएगा वो? राउटर के थ्रू होके जाएगा. And router will take him to the internet. Without help of a router, it's not possible to go and access the internet, whether you are in any network. Okay? We have seen the Swiss network, we have seen a router. Router कैसा लगता है देखने में, and we have seen the campus network design. कि हमारा जो कैंपस का नेटवर्क है वो कैसा बिल्ड होता है. आप NISSET या चंडीगढ़ की बात करें या किसी भी रिमोट कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की बात करें, बिना राउटर के उनका नेटवर्क पूरा नहीं हो सकता. I guess everyone is using internet here. If you are using internet, means you have to have a router. Without router, you cannot go and access the internet. Shall we move ahead? Okay. As I told you, that routers have different kind of ports available, and it can be accessed from several ways. First is your console port, from where you can directly take the console of the router and you can do the configuration there. Next is auxiliary port. It is similar to your console port. You can also do the configuration here as well. Next is virtual terminal, VTY terminals. Like we do SSH, we do Telnet. They all are virtual terminals. हम virtual terminals के through भी हम router का access ले सकते हैं. Let's take a scenario. I'm sitting in NISSET Chandigarh and I want to access a router which is located in USA. That is possible, right? How? With the help of your Telnet or your SSH, we can take the console and we can do whatever we want to do. Next is TFTP server. If you want to take the backup of the router, if you want to take the backup of the images of the router, we can also access a router with the help of your TFTP server. Okay? Okay. Now routers have three different kinds of modes. First is your user exec mode. Second is global configuration mode. And third is your second is your privilege exec mode and third is your global configuration mode.
इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड हम देखेंगे जो राउटर का, जब हम कंसोल लेंगे राउटर का, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, राउटर with this sign. The time we'll enter enable command here, enable, it will give the prompt to privilege exec mode. In privilege exec mode, what we can do is we can run the show commands. We want to have a look at the date of the router. We want to see how many routes are available. We can see the routing table. We can see how many interfaces are available on a router. Everything is possible on your privilege exec mode. But if I say if I want to assign some IP address to the interface of a router, that is not possible in the terminal here. In the privilege exec mode, what we'll be doing is we'll be writing a command configure terminal, and it will shift us to global configuration mode. Any kind of configuration you want to do on a router will be done at your global configuration mode. आप कुछ भी राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं वो सिर्फ ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही हो सकती है. लेट्स रिपीट. हम सबसे पहले अगर राउटर को ऑन करते हैं विल गेट इनटू यूजर एग्जेक मोड. यूजर एग्जेक मोड में हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते. यूजर एग्जेक मोड से हमें अगर इफ यू वांट टू गो टू प्रिविलेज एग्जेक मोड वी हैव टू टाइप enable, enable. Okay, the time we enter enable, it will come to privilege exec mode. In privilege exec mode we can run the show commands, and if I want to do some kind of configuration on the router, what I have to do is I have to write configure terminal in the privilege exec mode. So far so good. Any questions till now you can please ask me. Because I have kept theory very limited. If you are having doubts, you can please ask me. Okay, what are the routes? Some people say it as routes, but these are actually called as routes. Let's say I have a router here. Let's say I am a router, someone sitting there is also a router. If I want to send some data to him, how will the data travel? How will the packets travel? It needs some route. It needs a route to travel from one place to other. These are called as routes. क्या कहते हैं इन्हें? Routes कहते हैं इसे. Route is a path used by a router to send the packet to the different destinations. And for your knowledge, every router in a world is connected to your ISP. ये तो सब मानते हैं. कोई भी हमारे राउटर है तो हमारे ISP के साथ तो कनेक्ट होगा ही होगा. आपको ये पता है कि जितने भी ISPs हैं they are also connected with each other. Let's say I am talking about this Bharti Airtel network which is in India, but Bharti is also connected to T-Mobile and the AT&T which is located in US. We are not having services of AT&T and T-Mobile here, but still they are connected. That's why internet is called as network of networks. They all the ISP vendors are connected, whether directly or indirectly. Is it clear? Okay, routes can be defined statically and dynamically. We'll be doing it statically today and we'll be doing that dynamically tomorrow. Routes which are manually defined by the administrator to reach a particular destination are called as static routes. इसी के ऊपर हमारा टॉपिक है आज. Routes which are manually defined by the administrator to reach a particular destination are called as static routes. Let's say if I want to go from Chandigarh to Delhi, I have defined a path that first of all you have to go to Ambala, from then you'll head to your Karnal, then Panipat, and then you'll reach Delhi. This is a statically defined path that you have to follow this path. But is it a compulsion that I have to follow this path only? Maybe someone says, first of all I'll go to Patiala, from Patiala I'll go to some other place, and then finally I'll reach to Delhi. There's no compulsion as such. But if you are telling a path to a router that if you want to reach a particular destination, you should go by this place, it will be always given the preference over the dynamically
learn routes. I'll give you an example. Few days back, one of the professor from the computer science department, he went to Thailand. He went to Thailand. In his hotel, he was looking for a Punjabi restaurant in Thailand. The name is Balle Balle. The name of the restaurant is Balle Balle. What he did, उन्होंने अपने मोबाइल का GPS ऑन किया. GPS ने उन्हें दिखाया कि let's suppose this is the front of his restaurant, the hotel where he is staying. वो पूरा घूम कर गए और घूम के वो पीछे आ गए, उसी होटल के पीछे आ गए. Means he learned the path dynamically to reach that particular destination, क्योंकि उन्होंने GPS का सहारा लिया. अगर वो किसी से मैन्युअली पूछ लेते, और you will be surprised to know कि जो रेस्टोरेंट को वो ढूंढ रहे थे, जो बल्ले बल्ले को वो ढूंढ रहे थे, वो बिल्कुल उनके होटल की बैक साइड पे था, और वो कितना घूम कर गए. डायनेमिकली लर्न पाथ. और किसी से पूछा होता कि आई वांट टू गो टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, हाउ शुड आई गो? ओह, दैट्स एट द बैक. कितना छोटा रहता उसके लिए. I hope you are clear with this static and dynamic routing. Though static routes are used less, why? You'll come to know the reason in a short while. Is it clear? Okay, routes which are defined by using the routing protocols like RIP, which stands for your Routing Information Protocol. EIGRP stands for your Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. OSPF stands for Path First. Yes. Static routing. आज के जितना भी फोकस हम करेंगे सारा स्टैटिक राउटिंग पे ही करेंगे. By default, static routes have an administrative distance of 1. I'll be covering it, don't worry, which gives them precedence over routes learned from dynamic routing protocols. That's what I said. थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही कहा कि अगर आपको जो एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन कर रहा है that if you want to go to from Chandigarh to Delhi, you follow this path, उस पाथ को हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी over dynamically learned paths. Is it clear? And the administrative distance of static routes is 1. This is a very important term, AD, administrative distance. Can I use the word? I need chalk and duster. Let's say this is your route number 1. This is your route number 2. Route number 3. Route 4. And route 5. They are connected like this. And behind route number 4 we have some network. And here also we have a network. Let's say someone from this particular place wants to reach route number 4. How can he reach? He can go via R2, R3, R4 and he can go away. Or what else he can do is he can straight away go via R1 to R5 to R4. Which is the shortest path? Via R5. Alright. Which is the shortest path? Via R1 to R5 to R4. And he can reach his destination. But let's say what we have done is we have done static routing here. Static routing हमने यहाँ पर किए है और यहाँ पर हमने we are using routing information protocol. हमने क्या कहा कि that if you want to reach that particular network, you have to go via R2, R3, R4 and then you can reach your destination. So हमेशा preference किसे मिलेगी? Preference मिलेगी हमेशा static routes को. Why? Because its AD is less.
AD of static routes is 1. Static routes is 1. For RIP, it is 120. For EIGRP, and for OSPF, it is 110. Now let's take an example. What will be the case if I am running RIP here? Or let's say consider path where I am running EIGRP here. I am running will be given the preference. EIGRP path. Why? Because its AD is less. Is it clear? I'll introduce a new term tomorrow. It is metric. We'll be covering it tomorrow. Okay? AD clear हो गया, administrative distance. In our case, lower is always better. जितना कम administrative distance होगा, डेली लगा जाएगा वो अपने आप ही कर देगा। रीजन है हमारे यहाँ उसको लगा। Is it fine? OFC game. I hope it is clear to everyone. How do you come to this figure? AD for static routing is This is predefined. Sir, form of EIGRP. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. अगर दोनों जगह पर मैंने आपको मेट्रिक कहा ना, विल बी कवरिंग इट टुमारो, तो कल विल बी कवरिंग RIP एंड मेट्रिक का हम उसमें देखेंगे व्हाट अ मेट्रिक इज एक्चुअली. Could you explain a bit about EIGRP? Explain a bit details and what is by IG or EIGRP? EIGRP. Explain it please. It is Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. What do you mean by this enhanced? Okay. First of all, these all the routing protocols, whether we are running RIP, earlier what was the thing is we were running IGPs, RIP, Interior Gateway Routing Protocol, your OSPF, your ISIS, not that ISIS जो आजकल धूम धड़ाका करती है, but intermediate system to intermediate system. ये सारी आपकी IGPs थी, Interior Gateway Routing Protocols, जो आपके within a small network चलती थी. But BGP protocol is the one जो आपकी इंटरनेट पे यूज होती है. अगर इनसाइड अ नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं तो we'll be running any IGP which is your RIP, EIGRP, OSPF और ISIS. बट अगर हमें इंटरनेट पे जाना है, इंटरनेट पे आपको BGP रन होती है which is Border Gateway Protocol. और जैसे as you have asked कि why this is called as enhanced. Earlier, it was only Interior Gateway Routing Protocol, but they did some enhancement in this, and it is named as Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. When we used to study, at that time this was Cisco proprietary protocol, but now this is an open standard. Okay. Now, what do I mean by a proprietary one? Let's say if I want to run EIGRP. It means I have to have all the Cisco routers. I cannot run EIGRP between one Cisco router and one your let it be D-Link router और your base network कोई भी router हो सकता है. किसी और के router पे नहीं चलती थी पहले, but जब से उन्होंने open standard किया है तब से अब यही ज़्यादा यूज होगी आने वाले टाइम में. Why? Because its AD is less. Is it clear? Any more doubts? You can please ask me, because from now onwards we'll be heading towards the configuration part. Okay, to configure the static routes, you can please note down the syntax. In the global configuration mode, you can see this is config. We are into the global configuration mode. You have to type a command IP route
the destination address, the subnet mask, and the next hop address. IP route, destination address, subnet mask, and your next hop address. Is it clear? Any doubts? What is the destination address? What is subnet mask? Next hop, I guess अभी clear नहीं होगा किसी को. What do I mean by next hop? Can anyone please tell me? Perfect. सबनेट मास्क तो सभी को पता है हमें. क्लासेस के बारे में सब जानते हैं. क्लास A, B, C. D is used for multicast. Tomorrow I'll be showing you how class D is used for multicast. I'll show you tomorrow. अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा है कि class D is used for multicast, but tomorrow I'll be showing you how multicast addresses are being used. Is it clear? In this command, you give the next hop address that आप specify करके देते हैं. Right. इसीलिए स्टैटिक राउटिंग आपकी कम यूज होती है क्योंकि आज की डेट में हमारा जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा हो चुका है. सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स कि आप हर एक को एक एक मैन्युअली जगह पाथ देते रहें कि इफ यू वांट टू रीच दिस डेस्टिनेशन गो वाया हियर, इफ यू वांट टू गो टू दिस पर्टिकुलर प्लेस गो वाया हियर. सो ये तो अभी हमने एग्जांपल लिया है. दिस इज जस्ट ऑफ two routers, but in today's network we are having hundreds of routers, so it was very difficult. Okay, so let's have a look at our task. Configure two loopbacks on router 1 with an IP address this. Also configure router 2 with the loopback this. Now just to tell you, loopback is your test network just for the testing purpose. As we are not into the real world, I'll be using a simulator, or we can call it as an emulator. It is GNS3. GNS3, Graphical Network Simulator. It is an open source, freely downloadable. You can download it for free. We'll be using GNS3. You can download it. Okay. Loopbacks are for your test network. It will be used for testing purpose. Okay, check whether router 1 can reach router 2 without defining static routes or not. We'll be doing it. Okay, then let's come back straight away to this demonstration. I have already downloaded GNS3. GNS3 is basically an emulator. Why emulator? Because in this we are using the real images of a router. जो आपके राउटर में या स्विच में या जो कोई फायरवॉल होती है, जो रियल इमेज होती है, वही हम इसमें डिप्लॉय कर रहे हैं. सो दिस इज नॉट अ सिमुलेटर. अगर आपको सिमुलेटर चाहिए, एक सिमुलेटर सिस्को का आता है, सिस्को पैकेट ट्रेसर, बट आई गेस दैट इज ऑफ नो यूज बिकॉज यू कैनॉट रन हाफ ऑफ द कमांड्स इन दैट. So it's always better to go with GNS3. Okay, let's name it as static routing. This is a course of optical fiber communication, so let it be OFC. Okay. Say okay. Okay. Now what I have to do is I have to take two routers as per my task. I'll be taking the 7200 series router. This is a very high-end router used in your ISP networks. Just drag it and drop it. Drag it and drop it. Now what I have to do is I have to make a link between them. I have to connect these routers together. How I'll be doing it? With help of a interface. एक लिंक लेंगे, एक इंटरफेस पे लगाएंगे, दूसरे इंटरफेस पे जाके उस लिंक को रख देंगे. Can you all read? Add a link. Click here. Let's take fast Ethernet. इसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे राउटर के ऊपर.
इसको ड्रैग करके दूसरी जगह पे क्लिक करेंगे तो हमारा लिंक बन जाएगा दोनों के बीच में। Now if I want to see ये कौन से इंटरफेस से कनेक्ट हुए जाकर, उसके लिए Zoom, I'm not having that option. हाँ, टेक्स्ट नोटपैड पे I'll be writing all the things. Just a second. I have it. Is it better? Yes. कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया वैसे। आपके हेड के हिसाब से। Okay. थोड़ा सा कर। Okay, we can see what are the interfaces available. I have connected this link to fast Ethernet 1/0. Okay. So now what I want to do is I want to start the routers. If I want to take a console, I need to start them first, right? Click here and start. It will take some time, but this is almost like a real router now. And start this one as well. Now let's again have a look at the presentation. Here I'm taking 11 network. Can you see this is 11.0.0.0/24. Why 24? This is a classless network. We have already done the subnetting. अभी हमने subnetting यहाँ पे नहीं किया because subnetting requires whole day. If not whole day, at least 4 hours तो चाहिए. मतलब 1-2 session तो लगते हैं subnetting में. So as of now, think this is a classless network. This is a class A network actually, जिसको हमने classless बनाया हुआ और हम /24 के साथ जा रहे हैं उसमें. वैसे /24 हमारा class C network के लिए होता है. Okay? It would be 11.0.0.0/24, and let this interface be .1. Why .1? As we are connecting it to router 1, so let this interface be 11.0.0.1 and this be 11.0.0.2. Is it clear? Let's configure loopbacks here, 2 loopbacks. Loopback 1, which will be 8.0.0.0/24. Loopback 2, (9.0.0.0/24). जो यहाँ पर loopback लेते हैं, let it be 12 and 13. Okay? Any doubt till now? Why T2? Sir, समझा नहीं आपका. That this is just for a testing purpose. If you want, I can take 1 loopback as well. N number of loopbacks. Okay. Now I want to take the console of this router. Console means I want to configure this particular router. How we will be doing it? Either we can double click here. I can double click on a router, or I can right click, or I can take console. We have already started a router. Can you read? This is console. Let's take a console. सेकेंड राउटर का भी कंसोल डबल क्लिक से लेते हैं. डबल क्लिक से मेरे को सेकेंड राउटर का कंसोल मिल गया. There is another way. This is console to all the devices. You can click here and it will give you the console of every device available in your network topology. This is a very small topology. Only 2 routers are being used. अगर हम किसी बड़े नेटवर्क की बात करें तो वहाँ पे आपके hundreds of routers होते हैं.
तो सभी का कंसोल एक साथ नहीं लेना, इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं. Any doubts? You can please ask me. So now let's start with the configuration of router number 1. Can you tell me which mode is this? Router's name with the pound sign. Privilege exec mode. What we can do in privilege exec mode? Show commands, right? First of all, let's see the show clock. This is the time 2:58. Wednesday, September this, today's date. Okay. I also told you, if you want to see the routing table, we can see in the privilege exec mode only. So the command to see the routing table is show IP route and hit enter. Right now there is no routes available. Why? Because अभी तक तो हमारा router ही blank है. See, these are the codes. C is for connected, S is for static, R is for RIP, M for mobile, B for BGP, D routes are for EIGRP, EX is for external EIGRP, O is for OSPF. This is there are OSPF काफी बड़ा टॉपिक है, तो उसमें इंटर एरिया राउट होते हैं, कई सारे LSAs होते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे. ISIS, intermediate system to intermediate system. Okay. Now if I want to see how many interfaces are available on my router, how will we do it? Show interface IP brief. Sorry. Actually on firewall this is the command, show interface IP brief. But on a router it is show IP interface brief. Is it readable? This is saying I have this interface. What is the name of the interface? Fast Ethernet 0/0. What is the IP address? It is unassigned right now. OK, leave OK. Method is unset. Status is administratively down and the protocol is also down. I will be covering all these things. कि कैसे status up आएगा, कैसे इसकी protocol up आएगी, line protocol. Okay. So what commands we have done till now? Show commands. कौन सी? Show clock. To see the routing table, the command is show IP route. Show IP interface brief. This is for checking how many interfaces are available on a router. Okay. Now there is one very important command, show version. कि हम router के कौन से version के ऊपर काम कर रहे हैं. Whenever someone is going for an interview, हमेशा पूछा जाता है आपने कौन से वर्जन पे काम किया है. आई गेस यहाँ तो कुछ ज़्यादा टीचर्स हैं तो आपको कभी इंटरव्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट एज ऑफ फॉर द स्टूडेंट्स शो वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज सेइंग दिस इज सिस्को iOS सॉफ्टवेयर 7200 सॉफ्टवेयर है. दिस इज एन एडवांस एंटरप्राइज version is 12.4 22T3. This is a very high-end image. We can do all the cryptographic thing on this. In my previous session, which was on computer networks, we implemented VPN, virtual private network, with help of this router only. Okay. So now let's start with the configuration part. To enter into the global configuration mode, what is the command? Configure terminal or simply config T. Okay. Earlier you were in global configuration mode.
First of all, what I want to do is I want to create a loopback. Interface loopback1. Look, hit a question mark. You can configure this much loopbacks on a router, but you should not actually configure it. Why? Because आपका जो router है processor intensive होता है, तो it might run out short of memory. तो इसलिए इतनी सारी loopbacks को हम configure नहीं करते. So let's name it as interface loopback1. The time I hit enter, the the loopback should come up. See, line protocol up down, line protocol on interface loopback1 changed state to up. Change state to up. Earlier when we did this show command, जब हमने पहले show command run करी थी उस टाइम पे there was no loopback available. Now let's see whether we have a loopback available on route number 1 or not. Do show IP interface brief. Right now I am into the interface. If I want to run a show command, I have to write do in front of it. Okay. See, now the loopback is available. Loopback 1. Earlier there was no loopback. Here we are not having any loopback, but the time I said interface loopback 1, I have a loopback. Is it clear? And you can ask me that why the status of loopback is up. Well, the actual ports are actually down, but why the loopback is up? Loopback is up because it comes up as soon as your router comes up. It's a virtual interface just for the testing purpose. Is it clear? So now let's assign an IP address. To assign an IP address, the command is IP address. You can just simply press the tab button. Loopback is 8.0.0.1. Okay. Hit a question mark. It is asking for the IP subnet mask. Now we need to assign a subnet mask. Let it be 255.255.255.0. Why 255? 3 times 255 and a 0? Because this is a class C network. But we have done the subnetting and we have changed it to a classless network. Okay. IP address is already assigned. Now we have another loopback. Let it be loopback number 2. Let's assign an IP address 9.0.0.1 255.255.255.0. मैंने उसको IP address assign कर दिया. Now let's have a look at the interfaces available. Show IP interface brief. Can you see? There are 2 loopbacks available with the IP address assigned to them. On loopback number 1, the assigned IP address is 8.0.0.1, and on loopback number 2, the IP address is 9.0.0.1. यही हमने assign किया था अभी. Okay, but the job is not completed right now. What I have to do, I have to assign an interface IP address to the actual interface. This is just for the testing purpose. What is my actual interface? It is fast Ethernet 1/0. Okay. So now let's again go back to the configuration mode, global configuration mode, with the help of command config t. Interface fast Ethernet 1/0. यही है. Hit and enter. IP address is 11.0.0.1 255.255.255.0 and hit enter.
Now we have assigned the IP address to the main interface, which is fast Ethernet 1/0. Is it clear? Let's have a look. Do show IP interface brief. Okay. What we have done is we have assigned an IP address to this interface, but the status is still up. Sorry, still down. तो इसको अप लाने के लिए हम क्या करेंगे? मतलब अभी आपका एक इंटरफेस का एक लिंक तो है, बट इट इज इन द शटडाउन स्टेट. You need to bring it up with the help of command no shutdown. No shutdown. Okay. Hit enter. It should come up. Okay. Change state to up. Can you see? Clear info fast Ethernet 1/0 physical port administratively state down थी पहले, उसके बाद change state to up. Initially it was down, but now the status is up. Why? Because we have run the command no shutdown. Now let's have a look. Do show IP interface brief. See, this is up. This is IP address we have already assigned. We have manually set it. Status is up and the protocol address is also up. Is it clear? Okay. Now let's move on to router number 2 and do the initial configuration. IP addresses assign करना ये जो भी होता है, this is called as initial configuration of router. Okay, now you tell me the steps. There are 2 loopbacks available. 2 loopbacks are available with 12.2 and 13.2. Tell me the steps. What will be the first step or first command? Show command तो जरूरी नहीं है ना. We have already done the show commands. Global configuration mode, yes. Configure terminal. Next step is to create a loopback address. Interface loopback 1. What will be the IP address? 12.0.0. No, 2. 255.255.255.0. Do I need to do no shutdown here? No. Why no? It is already up. Yes, fine. Interface loopback 2. What will be the IP address here? 13.0.0.2 255.255.255.0. Okay. What will be the next step? Yes, perfect. Only one is speaking. What about others? Now we have to assign the IP address to this particular interface. Interface fast Ethernet 1/0. What is the IP address? 11.0.0.2 255.255.255.0. Hit enter. Now what will be the next command? No shutdown. Why no shutdown? Because this is a physical link. आपको इसको up लेकर आना पड़ेगा. Hit enter. Now let's have a look at the interfaces. Show IP interface brief. See, loopbacks are up. Interface is already up. Why? Because we run no shutdown command. Okay, any doubts till now? Please, you can ask me. Any doubts? Any questions? In the initial configuration, क्या किया हमने सबसे पहले? एक
दो लूपबैक्स क्रिएट किए, लूपबैक को आईपी एड्रेस असाइन किया, उसके बाद हमने जो फिजिकल पोर्ट था, जो फिजिकल इंटरफेस था, उसको हमने आईपी एड्रेस असाइन किया और उसके बाद उससे हमने नो शटडाउन किया। सिर्फ यही काम किया अभी तक हमने, और कुछ नहीं किया। ओके, नाउ हैव अ लुक एट द task. What it says, also okay, first part is already done. Check whether router 1 can reach router 2 without defining static routes or not. अभी तक हमने कोई भी static routes को as such define नहीं किया, तो हम देखते हैं क्या मैं router 1 से router 2 के पास पहुंच सकता हूं। What do you think? router 1 से router 2 को हम पिंग कर सकते हैं क्या? So confused, why? You must be knowing. No, I know, I remember you attended the lecture last time. We can ping. Why? Because they are directly connected. इस इंटरफेस से इस इंटरफेस पे मैं पिंग कर ही सकता हूं, डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। Let's have a look at the routing table at router number 1. Show IP route is the command. See, initially routing table was empty, but now it has some routes, and C stands for your connected, which are directly connected. Okay. If we want to update the record from our PHP page, then we can write this code. First of all, we have to write the correction string. Then we have to select the database. Then we have to write the. Was there any doubt or? Shall I continue or? Okay, C stands for directly connected. Now let's try to ping 8.0.0.1. कौन है 8.0.0.1? मेरा खुद का लूप बैक है, I can ping him. Success rate is 100%. अगर 8 को कर रहा हूं तो that's for sure मैं 9 को भी पिंग कर पाऊंगा. 9 is also pingable. Now let's try for 11.0.0.2. Will it go or not? How many for yes and how many for no? Come on, मैंने पहले ही बोल दिया it will ping. Okay, फर्स्ट टाइम आर्प किया उसने, इसलिए एक पैकेट ड्रॉप आया। एक और कमांड दिखाता हूं, शो आर्प। दिस इज द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ योर राउटर नंबर 2। दिस इज अ बर्न्ट इन एड्रेस। इसको नोट डाउन करते हैं। Okay, this is the hardware address of your route number 1. This is the hardware address of your route number 2. Show interface fast Ethernet, this is 0. Okay, मैंने क्या कहा कि शो इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस? फास्ट इथरनेट 1/0, जिसके साथ मैंने आईपी एड्रेस को असाइन किया है, जिसके ऊपर आईपी एड्रेस मेरा है 11.0.0.1। सी, दिस इज द एड्रेस, दिस is the address which can be changed, and this is the burnt in address which cannot be changed. Okay, this is the burnt in address जो पीछे से आपकी कंपनी ने आपको दिया है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, बट आप इस एड्रेस को जरूर चेंज कर सकते हैं। We'll do it today. Let's have a look. Is it the same or not? R1 का एड्रेस is this. See, this is same. CA00.109C001C. This is same.
आर्क करता है मैक और आईपी को आपस में बाइंड करता है, मैप करता है एक तरह से. Let's have a look at router number 2 and let's try to figure out, is it the actual MAC address जो राउटर 1 के पास है. राउटर नंबर 1 के पास R1 का क्या एड्रेस है? It is this one. This is 01, this is 00 and this is 01. This is the only change in the routers, in the MAC address of the routers. Show interface fast Ethernet 1/0. See, this is same. इसने उसी को लर्न किया हुआ है. Any doubts? इतना तो क्लियर हो गया हमें आर्क कैसे काम करता है, मैप करता है. मैप कैसे करता है अभी तक हमने सिर्फ सुना था, बट आई हैव शोड यू टुडे कि मैप होता है, मैप ऐसे होता है. एंड यू कैन हैव अ लुक एट द हेल्प ऑफ शो आर्क कमांड. R1 के ऊपर, R2 के ऊपर भी शो आर्क करते हैं. सी, दिस इज द एड्रेस ऑफ राउटर नंबर 1 जो इसने आर्क के थ्रू लर्न किया है, मैक एड्रेस, और ये उसका आईपी एड्रेस है और ये उसका मैक एड्रेस है राउटर नंबर 2 का खुद का. इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू पिंग फ्रॉम R2 टू R1 11.0.0.1. Will it be able to ping? Yes. Why? Because it was able to ping from the other side, so it will be also true. See? Which 3 मिनट पहले इसने इसको लर्न किया. ओके, ऐसे तो इसमें कई सारी चीजें हैं. MTU stands for your maximum transfer unit, BW stands for your bandwidth, DLY for delay, reliability कितनी होनी चाहिए, transmission load कितना होना चाहिए. There are n number of things, but as of now जो मैं आपको बता रहा हूँ, this is more than enough. If we'll get a chance to complete the EIGRP, we'll be changing all these parameters: MTU, bandwidth, delay, reliability, load. These all are the metrics for your EIGRP. metric को हम कल कवर करने वाले हैं. Okay. So yes, according to our task, we are able to reach from physical interface to the other physical interface. We are able to reach. But is it also true with the help of loopbacks? Am I be able to ping this 11.0.0.2 network from this loopback? Will I be able to ping? Will I be able to reach to this particular destination? Yes or no? Let's try ping 11.0.0.2 with a source of 8.0.0.1. Will it be able to ping or not? Say something. Yes, no, no comments. Yes. How many are for yes? So you're wrong. It will not be able to ping. Why? He doesn't have a route. He doesn't know how to reach that particular destination. Why? Because अभी तक जो भी हमने routing table इसका देखा, he only has the connected routes. He doesn't know from, because जो loopbacks हैं वो उसके पीछे के networks हैं. उन पीछे के network से उस particular destination तक कैसे पहुंचना है, he doesn't know. इसके लिए हम क्या करेंगे? We'll be using our static routing. But before going to static routing, मैंने आपको बताया कि हम MAC को change कर सकते हैं. तो उसको कैसे change करेंगे? Configure terminal, interface fast Ethernet 1/0, MAC address is the command. अभी तक हम IP address ले रहे थे. Now let it be MAC address.
इन्हीं का ही मैक एड्रेस देखते हैं, कुछ चेंज करते हैं इसमें. Changed to, let's change it to something 10. Let this be 10. और R2 पे let's change it to 11. Okay, let me copy this. ये तो हमें ये पता है ना कि हमने शो आर्ट से देखा कि ये मैक एड्रेस क्या था. एक मैक एड्रेस जो मैंने आपको बताया हम चेंज कर सकते हैं, और एक बर्न्ट इन एड्रेस होता है जो कभी चेंज नहीं होता. ओके, राइट द मैक एड्रेस हियर एंड हिट एंटर. Let me clear ARC once. Let's do it from the other end as well, though we don't need to. Show interface fast Ethernet 1/0. See, this changed. 10 ही रखा था हमने इसे. Earlier it was 00, but now we have changed it to 10. But the burnt in address will remain same always. See, this will be same all the time. You cannot change this one. Why? This is burnt in already. उसके अंदर embed किया हो, इसे change नहीं कर सकते आप. Let's change the IP address of your MAC address of your router number 2. Configure terminal. Interface fast Ethernet 1/0. MAC address. Let it be 11. Clear? Now, what is the command to see that we have changed the MAC address successfully or not? Show interface fast Ethernet 1/0. See, this is 11 now. अब ARC चेक करते हैं. पहले तो कुछ और एड्रेस था उसके पास. अब नाउ लेट्स चेक द ARC टेबल में उसके क्या पड़ा है. ARC की जो कैश होती है, शो ARC. सी, चेंज एड्रेसेस आर अवेलेबल नाउ. पहले कौन से थे? जो इनिशियल मैक एड्रेस था वही था, बट अब चेंज हो चुके हैं ये, और इसने अभी कुछ ही टाइम पहले लर्न किए. क्लियर? अभी जस्ट चेंज किया और हमने इसे अभी एंटर किया. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू स्टैटिक राउटिंग. काफी इधर उधर घूम लिए. लेट्स गो टू योर राउट नंबर 1. Okay, first command is configure terminal to enter into the global configuration mode. Now what I want to do is I want to do static routing. Now what is the syntax for static routing? It is IP route destination. What is the destination? If from R1 I want to reach this 12, let's try it. We haven't pinged it. Ping 12.0.0.2. अगर मैं ऐसे पिंग कर रहा हूं, इट मींस आई एम पिंगिंग फ्रॉम दिस फिजिकल इंटरफेस. अगर मैंने इसके आगे सोर्स लगा दिया तो इट विल गो फ्रॉम सम लूप बैक एड्रेस. अगर नॉर्मल पिंग कर रहा हूं मैं, मतलब मैं उसको उसके एग्जैक्ट इंटरफेस से पिंग कर रहा हूं. हिट एंटर. नो, इट्स नॉट गोइंग. इसको जल्दी रोकना है. कंट्रोल शिफ्ट एंड 6, अदरवाइज इट विल टेक सम टाइम. क्लियर? एनीवन फीलिंग लॉस्ट? No responses means no one is lost, okay? Or should I believe everyone is lost? Okay. IP route for router number 1 to reach to 12 network and to 13 network.
कैसे जाएगा? हिट क्वेश्चन मार्क. हमें स्टैटिकली एंट्रीज डालनी है. अलाउ स्टैटिक राउट्स. 12.0.0.0 255 255 255.0. Someone might ask me why this is 0. Means I'm allowing it for entire 12 network, not for that particular address but for the entire 11 network, 12 or 13 network. Okay, and what will be the next hop? This will be the next hop, 11.0.0.2. Perfect. Okay, hit enter. Next is IP route 13.0.0.0 255.255.255.0. कहाँ से जाएगा? Again next hop will be the same. If this network wants to reach here, he has to go via this place. इधर से होके ही वो जा सकता है आगे. Okay. 2. Any doubts? क्या किया है? सिर्फ स्टैटिकली पाथ डिफाइन किया है. इफ यू वांट टू रीच फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस, गो वाया दिस प्लेस. आपका ये नेक्स्ट हॉप एड्रेस है. आपको इसके थ्रू आप जाओगे तो यू विल गेट द पाथ. इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी द राउटिंग टेबल. Show IP route. Earlier we were having only C routes, which were connected routes. कितना तो याद है? तो ऊपर देख लेते हैं. Earlier I was having only these routes. Okay, C routes initially available. C stands for your connected. Now let's see. Show IP route. Can you see S entries are there? S stands for static. I told you administrative distance of static route is 1. Administrative distance. अगर कल हम RIP करेंगे, RIP करेंगे, तो उसमें administrative distance हमें यहाँ पे 120 दिखाएगा. Is it clear? और ये क्या कह रहा है? अगर आपको 12 नेटवर्क के पास पहुंचना है, go via, and same is true for, fine. Now let's go and do the initial configuration on your static. Let's define the static routes on your router number 2. Now you tell me, I want to reach from 12 network to this 8 network and from this to this 9 network. कैसे पहुंचेंगे उसके पास? What will be the path? IP route 8.0.0.0 next. And what will be the next hop here? 11.0.0.1. Hit enter. Next is IP route 9.0.0.0 255 255 255.0 11.0.0.1. Now let's have a look at the routing table. Show IP route. It is also having the static entries now. पहले क्या था? सिर्फ connected routes थे. अब क्या है? Static routes भी है. Now let's try. Am I able to ping? Just to have a look at show R. Ping 8.0.0.1. Will it be able to reach 8 network? Yes or no?
Why yes? Because we have defined the path statically. See, पहले नहीं जा पा रहा था. Okay, let's try it from the other end. Say ping 12.0.0.2. Will it go? Any doubts till now? I hope static routing is clear to you. तो इससे सिंपल तरीके में नहीं मैं बता सकता हूँ. Now let's try to ping 13.0.0.2 with a source of 10.0. Sorry, we have 10 or not? We have 8 and 9, right? Let's try to ping from 9.0.0.1. अब जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा. कोई और डाउट? Participants of the STC? I guess some students are answering, but I need to hear from the participants as well. Any doubts, sir? Okay. Now let's try to ping from this is 13.0.0.2 with a source of. अच्छा, what I can do is I can define the source that कि आप इस इंटरफेस से जाइए और मैं सीधा मेंशन कर सकता हूँ कि you go via this particular loop back. मैं कहता हूँ आप loop back 1 से जाइए, which is who is my loop back 1? Loop back 1 is my 12 network 12.0.0.2. इधर इस तरह भी पिंग हो सकता है. This is also true. ये तो हम खुद को ही पिंग करवा रहे हैं. 9.0.0.1 with a source of 12.0.0.2. इतना क्लियर है? Okay, what if I want to delete some route entry और मुझे लगता है कि गलत राउट हो गया है, उस केस के लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं. कैसे करेंगे? Show, this is an important command. Show run section route. It will show you all the routes available. Show run section. This is a very important troubleshooting command. Show run section route. इसने मुझे दिखा दिया कि इसके पास ये राउट्स अवेलेबल हैं और मुझे लगता है कि मैंने बाय मिस्टेक कोई गलत एंट्री कर दी है, तो उसके लिए मैंने उसको कॉपी कर लिया है. नो करूंगा उसके आगे, नो, एंड आई पेस्ट इट हियर एंड हिट एंटर. See, now there is only one route entry. Earlier we were having 2 route entries. 2 एंट्रीज मेरे पास अवेलेबल थी, बट अभी मेरे पास सिर्फ एक ही एंट्री अवेलेबल है. Now from route number 2, let's try to ping 8.0.0.1 network with the source of 12.0.0.2 network. Will it be able to reach? Yes or no? It will not go. Why? Because हमने उस एंट्री को ही हटा दिया हुआ. जो स्टैटिकली हमने राउट डिफाइन किया था, if you want to reach that destination, हमने उसको ही हटा दिया हुआ. और कोई डाउट? अगर उसको वापस लिखना है तो IP route 8.0. Okay, tell you one more thing.
स्टैटिक राउट हमने किया, एक होता है डिफॉल्ट राउट। क्या होता है? एक स्टैटिक होता है और एक डिफॉल्ट होता है। अगर हम कभी भी रियल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, फ्रॉम आर एंड वील ऑलवेज पॉइंट अ डिफॉल्ट राउट टुवर्ड्स आवर आईएसपी। अपनी कंपनी से या अपने कॉलेज के कैंपस नेटवर्क से हम हमेशा अगर इंटरनेट के पास जाना चाहते हैं, हम एक डिफॉल्ट राउट को देते हैं। डिफॉल्ट राउट मीन्स अगर आपको हमारे नेटवर्क में कुछ नहीं मिलता, गो टू इंटरनेट, यू कैन फाइंड इट देयर। इज इट क्लियर? डिफॉल्ट क्या होता है? स्टैटिक इज एक पर्टिकुलर पाथ के लिए, एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए। इफ आई वांट टू रीच फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली, दैट राउट इज ओनली अवेलेबल टिल दिल्ली। अगर मेरे को दिल्ली से आगे जाना है, उसको नहीं पता दिल्ली के आगे कैसे जाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं? डिफॉल्ट राउट देते हैं। डिफॉल्ट राउट कैसे देते हैं? 0.0.0.0 0.0.0 and the next hop address. In this case, next hop address is 11.0.0.1. Before writing this command, let's see this. Show IP route. It is saying that gateway of last resort is not set. Gateway of last resort is not set. अब मैं इसको एक स्टैटिक एंट्री देता हूँ, सॉरी डिफॉल्ट एंट्री देता हूँ, IP route 0.0.0.0.111.0.0.1 कि यार आपको कुछ नहीं मिलता हमारे नेटवर्क में, you go to internet. Let's assume that in this case router number 1 is our ISP. अगर आपको हमारे नेटवर्क में कुछ नहीं मिल रहा, you just go to ISP. See, do show run see, gateway of last resort is set for this network, means for any network. अगर आपको कहीं पे भी जाना है, use this path. And this is static entry, and this asterisk sign here means candidate default. As of now, we don't have an entry to reach 8 network from router number 2 because हमने उसको delete किया था. Show run. आप यहाँ पे भी देख सकते हो हमारे पास कोई एंट्री है ही नहीं अवेलेबल। 9 नेटवर्क के लिए तो एंट्री है, बट वी डोंट हैव एनी एंट्री फॉर 8 नेटवर्क. सो विल इट बी एबल टू पिंग नाउ? सी, एंट्री नहीं है. Let's do one thing. Let's configure one more loopback on router number 1. Interface loopback. Let it be loopback number 3. IP address. Let it be 10.0.0.1 255.255.255.0. We need not to do no shutdown here. Why? Because the loopback network. 10 नेटवर्क के लिए भी एंट्री नहीं है. राउटर नंबर 2 के पास 10 नेटवर्क के लिए भी कोई एंट्री नहीं है, तो क्या जा पाएगा उसके पास? वाई? कैसे जा पाएगा? डिफॉल्ट राउट की वजह से. पिंग 10.0.0.1. सी, let's try to ping it with the source of 12.0.0.2. Perfectly pingable. You know how ping works? पिंग तो हम काफी देर से कर रहे हैं, पर पिंग कौन सी प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करता है? Come on, say anything. कौन सी प्रोटोकॉल के ऊपर पिंग वर्क करता है? It works on ICMP.
पिंग आपका ICMP के ऊपर काम करता है। और पिंग कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल सेंड एन इको एंड इट विल गेट एन इको रिप्लाई बैक। पहले आपको इको सेंड करेगा, इन इको जब सेंड करेगा तो सोर्स क्या होगा? सोर्स विल बी माइन एंड डेस्टिनेशन विल बी द एड्रेस जहां पे मैं जाना चाहता हूं। बट इको रिप्लाई आएगा तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। यू वांट टू सी debug IP packet. Okay, let's go to your route number 1. Tell him ping 12.0.0.1 with the source of, let it be 8.0.0.1. नहीं 8 से नहीं करवाते बिकॉज यहाँ पे हमने डिफॉल्ट राउट नहीं दिया हुआ। 9.0.0.1 and repeat it one time only. ओके हमने गलत लिख दिया, दिस इज .2 एक्चुअली। सी सक्सेसफुल हुआ। एक बार रिपीट करने को बोला था, अगर हम वैसे सीधा पिंग करते हैं वो 5 बार पिंग करता है उसे। अगर पिछला कोई पिंग देखें तो सी दिस इज 5 इन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। मैंने क्या किया, रिपीट इट वन टाइम, दिस इज इट। एक बार उसने उसे पिंग किया। अनडिबग करने के लिए यू ऑल मींस अनडिबग ऑल। सी सोर्स क्या था? 9 नेटवर्क था। कहां से पिंग करना है आपको? 9 नेटवर्क से पिंग करना है। कहां पे जाना है? 12.0.0.2 के लिए जाना है। सोर्स इज 9.this, डेस्टिनेशन इज 12.2। बट यहां पर जब इसने इको रिप्लाई सेंड किया, कैन यू सी इको रिप्लाई सेंड, यहां पे सोर्स इज चेंज्ड टू from 9.1 to 12.2 and the destination is also sent. Sorry, destination is also changed. This is how your ping works. Echo and echo reply. If you want to see the running configuration, जो अभी तक हमने जो काम किया है, show running configuration and hit and enter. कुछ ऑटोमेटिकली जनरेटेड कमांड्स होती हैं इसमें। इंटरफेस इज दिस, लूपबैक हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया। यहां पर हमने एक इंटरफेस था फास्ट ईथरनेट 1/0 जिसका हमने मैक एड्रेस भी चेंज किया और इसको आईपी एड्रेस भी हमने असाइन किया। नेक्स्ट व्हाट वी डिड, हमने एक डिफॉल्ट राउट दिया और एक स्टैटिक राउट दिया। दिस इज इट। लेट्स से इफ आई वांट टू टेक द टेलनेट सेशन फ्रॉम राउटर नंबर 1 ऑफ राउटर नंबर 2, हाउ विल डू इट? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स enable telnet here. The commands is line vty 0 to 4, okay, login, hit enter, write a password कि आप क्या पासवर्ड चाहते हैं टेलनेट के लिए। let the password be NITTR@123, hit enter, enable secret, let it be TTR@321। दो पासवर्ड मैंने इसके ऊपर सेट किए। लेट्स गो टू राउटर नंबर 1 एंड ट्राई टू टेक द टेलनेट सेशन ऑफ योर राउटर नंबर 2। आई एम सेइंग टेलनेट किसको करना है? 11.0.0.2, hit enter. It is asking for the
पासवर्ड, और आप कहीं पे किसी का एक्सेस लेते हैं, इसी तरह से एक्सेस लेते हैं, बट इन दैट केस यू ओपन अ पट्टी टर्मिनल. ओके, आई शो यू कैसे करते हैं उसको भी. दिस इज पट्टी टर्मिनल. यहां पर आप आईपी एड्रेस लिखिए, एसएसएच करना चाहते हैं या टेलनेट करना चाहते हैं करके उसको आप ओपन करने के लिए कहेंगे तो आपके पास सामने इसी तरह का एक टर्मिनल खुल जाएगा जो अभी हमने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी. ओके, पासवर्ड क्या था? NITTR@123. सी वी आर इन साइड राउट नंबर 2. वी आर इन विच मोड? यूजर एग्जिट मोड. अभी तक हमने नहीं देखा. प्रिविलेज देखा हमने, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में देखा, बट यूजर नहीं देखा था. आई हैव डन दिस पर्पसली कि आप यूजर एग्जिट मोड को भी देख सके. व्हाट विल बी द फर्स्ट कमांड? इनेबल. हिट एंटर. इनेबल के बाद भी पासवर्ड मांगते हैं. वो क्या सेट किया था? NITTR@321. hit and enter. We are inside your route number 2. Now I can do any changes here. Show IP route. सारे routes दिखा रहे हैं मुझे. मैं क्या करता हूँ? I don't want a default route from your end. IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 11.0.0.1 जो हमने डिफॉल्ट राउट नंबर 2 से हमने एंटर किया था, मैं उसको राउट नंबर 1 से इसका टेलनेट सेशन लेकर उसको डिलीट कर रहा हूं. कैन यू सी? सॉरी, आई फॉरगॉट टू राइट नो इन फ्रंट ऑफ दिस. नो. और मैं एंड करता हूं, यहां से इसको एग्जिट कर देता हूं. आई एम बैक इन योर राउट नंबर 1. Now let's move to route number 2. Let's say earlier I was able to ping 10 network, जो कि हमने एक loopback address बनाया था without having any static entry. Why? Because we are having a default route. But now let's see. 10.0.0.1 will be able to ping. No. Why? Because हमने उस डिफॉल्ट एंट्री को ही हटा दिया. कैसे हटाया? हमने टेलनेट सेशन के लिए थ्रू हटा दिया उसे. एनी डाउट्स टिल नाउ? लेट्स डू वन थिंग. लेट्स से ऑन माय राउटर नंबर 2 आई एम रनिंग माय वेब सर्वर. आईपी HTTP सर्वर. मैं उसके ऊपर अपना वेब सर्विसेज को रन कर रहा हूं. हिट एंटर. अभी कोई पेज ओपन नहीं होगा बिकॉज दिस इज अ राउटर एंड दिस पेज भी ओपन हो सकता है, बट दिस इज एन एमुलेटर, तो यहां पे तो कोई पेज ओपन नहीं होगा. बट नाउ लेट्स ट्राई टू टेलनेट 11.0.0.2 at port number 80. 80 is for your HTTP. आई एम सेइंग कि मेरा उस राउटर पे मेरा एक वेब सर्वर पड़ा हुआ है, या कोई भी वेब सर्वर पड़ा हुआ है, तो मैं इसको टेलनेट सेशन लेना चाहता हूं. ओपन. इसने कोई पेज नहीं डिस्प्ले किया बिकॉज ये तो हमारा एक एमुलेटर है, बट रियल सिनेरियोज में ऐसे काम किया जा सकता है. आर गेटिंग माय पॉइंट? कैन यू सी? टेलनेट किया मैंने कौन से पोर्ट के लिए? पोर्ट नंबर 80 के लिए. इसको गेट करते हैं. इट लॉग्ड मी आउट. अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है उसके लिए कमांड है राइट. कमांड इज राइट. हिट एंटर. राइट. दोनों की दोनों कॉन्फ़िगरेशन मेरी सेव हो चुकी है. So this was our static routing. Static, default, प्लस हमने बेसिक्स भी कवर किए. बेसिक्स में क्या? हमने मैक एड्रेस को कैसे चेंज करते हैं, आईपी एड्रेसेस को कैसे असाइन किया जाता है, कैसे इंटरफेसेस को अप स्टेट में लेके आया जाता है. वी हैव डन एवरीथिंग.
If you are having any doubts, and the participant at the remote centers, if you are having any doubts, you can please ask me. उसके लिए नहीं सेट किया ना हमने. HTTP is just your web page. आप किसी साइट के ऊपर जाना चाहते हैं तो क्या उसके लिए पासवर्ड डालते हैं? You never enter a password. डायरेक्टली पेज ओपन होता है. This is just to tell you कि ऐसे होता है. यहाँ पे हम उसका HTTP सेशन नहीं लेके दे सकते. If I type HTTP something /11.0.0.2 ये वर्क नहीं करेगा यहाँ पर. This is just to tell you how things are working in the real scenario. Any doubts? So हमने static routes को किया, default को किया. Make sure that R1 is able to ping both the loopbacks of R2 and R2 is able to ping both the loopbacks of R1. हमने वो भी किया, but हमने इसमें कुछ add on भी किया. हमने default route डाला, हमने इसका telnet session लेना सीखा, HTTP session लेना सीखा. So I think it is enough for today. So if you are having any questions, you can please ask me. Remote centers. So thank you very much. I hope this was informative for you, and thank you for your cooperation. Thank you very much.